अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल मेरी भैनों ते भराओ, दोस्तों ते यारों, बेलियो ते मित्रों, क्या हाल ने? ठीक ठाक। आज मैं कला रिएक्शन दे रहा हूँ, मेरे नाल इमरान भाई नहीं ने, बड़ा बोर हो रहा लेकिन रिएक्शन तो देना ही देना ना। यकीनन तुहानू मेरा ये रिएक्शन भी पसंद आएगा, तुसी देखोगे तो तुहानू चंगा लगेगा। आज मैं एक ऐद साज शख्सियत ते लैजेंड और लैजेंड जिन्होंने दुनिया का शायद ही कोई कोना हो जिथे लोग ना जानते होन, ते ओदा नाम हैगा चार्ली चैपलन। तुसी वीडियो देखो, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन्होंने मिलिया सी 1972 1972 दे विच। तुसी ये वीडियो देखो किस तरह चार्ली नू और लोग एप्रीशिएट कर रहे हैं। फिर दोबारा गल करेंगे। Humor heightens our sense of survival and preserves our sanity. These are the words of Charlie Chaplin. So are these, written over 30 years ago. We think too much and feel too little. More than machinery, we need humanity. More than cleverness, we need kindness and gentleness. Without those qualities, life will be violent and all will be lost. Humor and humanity, the abiding elements of Chaplin's artistic conscience and his unparalleled talent as actor, writer, director, producer, composer, and to quote W.C. Fields, the greatest ballet dancer that ever lived. Chaplin made more people laugh than anyone in history, yet always, just beneath the hilarity, were the fears and sorrows of every man. So that one book about him is aptly titled Charlie Chaplin, King of Tragedy. He created an immortal character, the little tramp. 1,000 writers have woven allegories around him. Here's how Chaplin described him: a tramp, a gentleman, a poet, a dreamer, a lonely fellow, always hopeful of romance and adventure. He would have you believe he is a scientist, a musician, a duke, a polo player. However, he's not above robbing a baby of its candy. And of course, if the occasion warrants it, he will kick a lady in the rear, but only in extreme anger. The world responded not only to the wondrous humor of the little tramp, but also to the love and indomitability he represents, to Chaplin's soaring theme that man's humanity to man is greater than his inhumanity. The inscription reads, "To Charles Chaplin, for the incalculable effect he has had in making motion pictures the art form of this century." Chaplin has become more than a name. It is a word in the vocabulary of films, and anyone who has ever seen a movie is in his debt. A few years ago, Mr. Chaplin said, "My only enemy is time." We respectfully disagree. For wherever and whenever there is communication, a screen and an audience, whether here on earth and now, or in some unfathomable future on some faraway star, time is Charlie Chaplin's dearest and eternal friend. Heavy. Oh, wonderful. Oh, thank you so much. This is an emotional moment for me.
and words seem so futile, so feeble. I can only say that thank you for the honor of inviting me here, and oh, you're wonderful, sweet people. Thank you. जी ते लेजेंडरी अदाकार चार्ली चैपलिन उस टाइम के अदाकार ने जिस टाइम ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो सकती सी, सिर्फ और सिर्फ वीडियो कैमरे होंगे सन ते अपनी आवाज़ के बगैर उन्होंने दुनिया को अपना दीवाना बना दिता सी, अपना गर्विदा बना दिता सी। ते तुसी चार्ली चैपलिन की पुरानी जिन्नी भी वीडियो देख लो तुहानू ओहदे च बोरिंग नजर नहीं आएगी। बगैर आवाज़ के जिन्हें दुनिया को अपने शहर कैद कर लिता सी, वो एहसास शख्सियत चार्ली चैपलिन दी जी लोगों ने इन्ना एप्रीशिएट किया। 12 मिनट तक वर्ल्ड रिकॉर्ड हैगा किसी एक्टर के लिए, लोग खड़े होकर क्लैपिंग कर रहे सन। तो तुसी देखिया किस तरह लोगों ने एप्रीशिएट किया चार्ली चैपलिन। उन्होंने चेहरे ते वो फर्द मुसरत ते खुशी के आंसू तुसी देखे उन्होंने अखां दे विच। यकीनन तुहानू बड़ी चंगी लगेगी वीडियो। अगली वीडियो दोबारा मुलाकात होगी। अपने होस्ट मुबशर अली नू इजाजत दो। मेरे चैनल नू जरूर लाइक सब्सक्राइब ते बेल आइकन का बटन दबाना ते प्लीज शेयर भी कर देना। एक दो दोस्त नू कह देना कि सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह अगली वीडियो दोबारा मुलाकात होगी।